Piyush Goyal crying about deep tech and AI while CBSE website crashes every year on result day. Piyush Goyal ji, it's not like we don't have bright minds in India. For example, we had this highly qualified AI engineer, and what did the system do with him? साला entrepreneur साल भर काम करेगा या तेरा फालतू फॉर्म भरेगा? भाई इसके दिल से निकला ये. Let's get into the glorious backlash to our commerce minister's delusional comments. पहले सुनते हैं कि इन्होंने अपने उपदेश में क्या बताया है. I've been going through a lot of our startup success stories, fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know. Vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को. दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की. दे आर इन्वेस्टिंग हेविली टू बिकम सेल्फ रिलायंट. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? सो ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर जी, आपको एक स्टोरी दिखाता हूं ऐसे बंदे की जो इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और ये दिखाता है कि आपकी ही सिस्टम कैसे उसके साथ बर्ताव करती है. Piyush Goyal, I am a semiconductor startup founder. Here is my rant in response to your rant. I heard that you ranted that no one is doing semiconductors. Well, I am. Now you hear my rant. Decades of experience designing some of the most complex chips. I left Intel, started a semiconductor company in 2018. We are profitable. We design chips for clients in US and EU. One of our clients is known as father of AI. So this is as deep tech as you can get. So we have stopped wasting our time trying to get Indian clients, private sector, government or defense. So this is one of the issues कि deep tech के लिए शायद इंडिया में इतना market है ही नहीं. So here is a honest feedback from the startup you said everyone should be doing. I have attended quite a few RFQs by Ministry of Electronics and Information Technology. At a few sessions I said we have experience, capability to develop the chip as per your specification. We will incur the cost in particular crores. How many chips are you planning to buy? So this person gets a reply, you build it, then we will decide, or we won't buy, you go and find whether there is a market for this. So obviously no startup is going to burn 2 years 10-20 crores on a product where there is no market or no buyer. Secondly, in one of the meetings organized by startups by the defense sector, speaker from the government spoke for an hour on how they are facing various difficulties with a particular tech. At the end of the speech, this person met this guy, informed that we have solved some of these problems. So what would be the best way to engage with the department? अब जनरली अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी आप पे बोलते हो तो इमीडिएटली कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पूछेंगे, फिर एक डिस्कस करने के लिए शेड्यूल होगी मीटिंग एक्सेट्रा. But from this defense genius, I got a long rant on how they are not dumb. They are bright people capable of solving their problems, who have been working day and night and have not seen their families. They do not need help from private sector. So basically ऐसा लग रहा था कि उनको जबरदस्ती गवर्नमेंट ने ये कॉन्फ्रेंस कराई है. मतलब बेसिकली 2 दिन का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्फ्रेंस ये वेस्ट है. मतलब फिर ये बोल रहा है कि सिंस यू कैन नाइदर गिव कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर फैसिलिटेट इट, बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, मतलब रेगुलेशंस कम करो, ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम सॉल्व करो, या फिर टैक्सेस कम करो. But buddy, you have failed in this too. My startup is eligible for certain tax breaks. Your department sat on my application for 2 years and returned it to me last week asking for additional documents with a note that after submitting, again the process will start and it will be back to the queue. So wait another 2 years, and within hours of the rejection, he gets a call from a facilitator who promised me quick and guaranteed results if I use their service for preparing my documents. Obviously सबको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है. Second, due to your tax laws, I end up paying twice the amount with respect to the competitors, because commerce minister जी international जाने की बातें कर रहे थे, for importing various resources, EDA licenses, equipment and raw material.
Third, if I need to import a $10 wireless device for my lab, I need to pay 10,000 to the government to get approval to import it. Every year your government creates new compliances. इंडिया में यही होता है कि गवर्नमेंट बिजनेस को पहले चोर मानता है, फिर बोलता है कि प्रूव करो कि आप चोर नहीं हो. I need to weed through a compliance calendar with over 300 items and identify compliance that are applicable to me and follow them. साला entrepreneur साल भर काम करेगा या तेरा फालतू फॉर्म भरेगा? भाई इसके दिल से निकला ये. Fifth, some of your faulty portals have eaten up tens of thousands of my company's money, and until I go and meet your babu, they will not initiate a refund. Buddy, instead of blaming others, focus on your own job, which is good governance, and get out of our way. We entrepreneurs have the capability to build world-class products. ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर जी, आपको पता होना चाहिए कि दूसरों को एडवाइस देना बहुत आसान होता है और खुद का काम करना, जो इस मामले में है गुड गवर्नेंस, वो काफी मुश्किल होता है. और सुनते हैं. And how our resources are going only towards hyper-fast logistics. And look at what the other side is doing. Robotics, automation, machine learning, preparing themselves for 3D manufacturing. Next-gen factories that are more efficient and that compete with the rest of the world. We'll need to go global. We'll need to think big. We'll need to be ambitious. We'll need to experiment. We'll need to go beyond the boundaries of our own thinking. Let's not limit ourselves with the past. Let's explore the unknown. भाई ये जो बातें चल रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इससे ऐसी फीलिंग आती है जैसे एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट एक साथ मिलके कोई टारगेट की तरफ देख रहे हैं और काम कर रहे हैं. भाई सच्चाई तो यह है कि एंटरप्रेन्योर्स को आपकी सिस्टम से डेली बेसिस पे लड़ना पड़ता है और उसके ऊपर उनको बिजनेस भी करना पड़ता है. अगर आपको बिलीव नहीं होता तो ये ट्वीट्स देख लीजिए. महिमा जैन says, after finishing my masters in journalism, I decided to start my own agency and create jobs instead of working for someone else. बहुत बढ़िया. But soon after, I got a reality check. My GST application was rejected, not due to any issue in paperwork, but because the officers expected as in-person visit. So I could settle the matter. सबको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है. Getting international payments is a headache. So this is also true. RBI के काफी regulations है. If a client pays you, payment gets flagged, your account might get blocked, etc., various problems. And when you complain, what happens? Nothing happens. Yet the same ministers go in public platforms to say entrepreneurs aren't building real value. It hurts. Not because building a business is hard, that is accepted, but because when you are trying to do something right, you are met with red tape, bribes, and zero support from the very system that claims to champion entrepreneurship. Of all the outrage directed at Piyush Goyal over his statement on startups, one common theme was the corruption complaints related to the GST department. From my experience, I can confidently say that GST department is currently the most corrupt government department. This is the harsh reality no startup reel shows. You don't just fight market forces, you fight the system meant to support you. Actually, ये इतना सही नहीं है. This system is not meant to support businesses. This system is created for the bureaucrats. Respect to every Indian entrepreneur building despite the government, not because of it. You are the real backbone. ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप जिस सिस्टम के अब ऊपर जाके बैठे हो, वही सिस्टम एंटरप्रेन्योर्स को लूटने का और उनके रास्ते रोकने का काम करती है. इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ही इंडिया में जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस भी गवर्नमेंट को दे रहे हैं. 11 साल से हम एनडीए गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि एक भी आपने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म अब तक लिया नहीं है. इससे पता लगता है कि आपको सिर्फ उपदेश देना आता है और आपको एक्शन कुछ लेना नहीं है. Piyush Goyal ji, it's not like we don't have bright minds in India. For example, we had this highly qualified AI engineer, and what did the system do with him? अभी तक इस केस में जस्टिस मिला नहीं है. जिस पर केस डाला जाना चाहिए था उस पर केस भी नहीं डाला गया है. अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद जस्टिस मिलेगा भी नहीं. फिर ये कुछ और भी बोलते हैं. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. भाई इंडिया में इतना ज़्यादा चीप लेबर क्यों है? क्योंकि अच्छे जॉब मिलते नहीं है.
Post COVID, the unemployment rate is 42% for graduates under 25 years, as per the State of Working India 2023 report. Food delivery apps turning unemployed youth into delivery agents for the rich, says Minister Piyush Goyal. Bro forgot to add who is responsible for the unemployed youth. So basically हमें रिफॉर्म नहीं करने, हमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं करने, हमें लैंड रेगुलेशन, लेबर रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन, इसके कुछ भी रिफॉर्म नहीं करने के, हमको ट्रेड रिफॉर्म्स भी नहीं करने के, बट जो भी लोग जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हमें जरूर कंप्लेन करनी है. Piyush Goyal complaining about Indian startups not doing core technology research is like an Indian parent complaining about their kid not winning 100-meter Olympic gold medal after making the child study 100 hours per week for JEE NEET exams. और सही भी बात है ना, आज हम एंटरप्रेन्योर्स को क्या सिखा रहे हैं? हम एंटरप्रेन्योर्स को सिस्टम से लड़ना सिखा रहे हैं, ऐसी सिस्टम जो उनको लूटने के लिए और रोकने के लिए बनी हुई है. सो स्टार्टअप्स का सारा इनोवेटिव कैपिटल इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज द मनी इज गोइंग टुवर्ड्स फाइटिंग द सिस्टम एंड नॉट इनोवेशन. Piyush Goyal crying about deep tech and AI while CBSE website crashes every year on result day. Don't even get me started on the dogshit UI and failure rates of Sarkari bank websites. Maybe start with functional website in 2025. So basically खुद का काम करना नहीं है और दूसरों को बड़े बड़े उपदेश देने हैं. Anyways, that's all for this video. Tell me your experience with ease of doing business in India and any interesting corruption stories you might have in the comments below. Thanks for watching.